Hello everyone, welcome to the second session for Motion and Time. Uh, Before we begin this session, let's just have a quick recap of what we did the last time. So in the last session, we studied what is distance and what's its unit. We also saw what is speed and how to define speed. So what was speed? Speed was basically the distance that we could cover per unit time. We saw what was the meaning of per unit. We also saw the mathematical formula for speed, which was the distance covered by an object divided by the time taken to cover that distance by the object. So we learned this in the last time, um, and let's begin the next session from measurement of time. So coming to the chapter, let's begin. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at the shadows? How do we measure time interval of a month or a year? So they're asking a few basic questions as to how did we measure time before we had clocks? So did we just look at shadows and approximate time? क्या हम सिर्फ परछाई को देख के टाइम का अंदाजा लगाते थे या हम कैसे टाइम नापते थे बिना घड़ियों के या हमारे पूर्वज कैसे टाइम नापते थे? So how did they do it? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. So what did they notice? That there were some events that were periodic, um, over over a time. तो वो रोज रोज होते थे छोटे छोटे गैप्स में. जैसे रोज सूरज निकलता था. Every day there was a sunrise, and then again next day there was a sunrise. The time between one sunrise and the next sunrise was called a day. Similarly, a month was measured from one new moon to the next. तो क्या होता था कि न्यू मून आता था जब तब से आपका महीना चालू होता था. फिर फुल मून आता था और फिर दोबारा जब न्यू मून आता था, देन योर नेक्स्ट मंथ यूज टू स्टार्ट. तो दिस यूज टू कीप अकरिंग over and over again, and this periodic uh, behavior of nature actually helped us measure time. So a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. तो हमें पता है कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है और ये हर साल करती है. तो क्योंकि ये बार बार हो रहा है, ओवर ओवर एंड ओवर अगेन, तो हम क्या कहते हैं कि एक बार जब अर्थ पूरा रिवॉल्व कर लेगी तो उसको हम वन ईयर कह देंगे. फिर दोबारा जब वो एक और बार रिवॉल्व कर लेगी तो उसको दोबारा वन ईयर कह देंगे. और आप ध्यान दीजिए कि ऑल दीज थिंग्स आर measurement units of time. 1 year is what? It's a time. And how are we measuring it? We are measuring it through nature. आप इसको किसी घड़ी से नहीं नाप रहे हो, but you are measuring it from the nature. So often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें नापना होता है टाइम which is not such a long time, जैसे कि पूरा दिन या पूरा महीना या पूरा साल. हमें मान लो आधा घंटा या एक घंटा नापना है. Then how do we do it? So what do we do? We use clocks and watches. So they're perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of clocks is rather complex. तो जो internal working of clocks होती है वो complex है. But what is the important thing that we should keep in mind? That all clocks make use of some periodic motion. तो हर एक क्लॉक में कुछ ना कुछ
पीरियोडिक मोशन होता रहता है जिससे वो टाइम नापती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट वे which a clock uses to measure time. What is a pendulum? If you have ever seen a clock which looks like this, like the wall clock, तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा है that is the pendulum, and this is the table clock जो कि आम घरों में पाई जाती है, and this is the new digital clock which most of the people may be using in their homes still. So moving on, just giving you a picture of what a pendulum actually looks like. So this is kind of a pendulum. What does this have? It has a string and it has a ball attached to it. Now you can push this ball left or right, and this whole um, sort of instrument will start making motions. It will start swinging. आप लोगों, अगर आप लोग पतंग उड़ाते हो, और if you have ever played with a thread, अगर आपने कभी किसी थ्रेड के साथ खेला हो उसमें पत्थर बांध के, और उस थ्रेड को फिर लटकाया हो और फिर ऐसे ऐसे साइडवेज स्विंग किया हो, तो दैट इज अ परफेक्ट पेंडुलम दैट यू कैन मेक योरसेल्व्स एट होम। तो वो भी एक पेंडुलम का काम करता है। या फिर आप कभी भी झूले पे बैठे हो किसी पार्क में, तो यू कैन अज्यूम दैट दिस स्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग दैट हैंग्स फ्रॉम, जो झूले का स्टैंड होता है, एंड दिस बॉल इज योर प्लेस वे यू सिट। और फिर पीछे से आपको कोई धक्का देता है और आप आगे पीछे जाते हो एक पीरियोडिक मोशन में। जैसे आप, यहाँ से आपको किसी ने धक्का दिया, देन यू गो ऑल द वे टू ए, एंड देन अगेन यू कम बैक टू बी, देन अगेन you go all the way to A, again you come back to B. So this is a periodic motion. What is actually a periodic motion? Which repeats itself over a time. तो पेंडुलम भी एक पीरियोडिक मोशन करता है। Now, a simple pendulum consists of a small metallic ball and a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. तो हमने देखा कि पेंडुलम के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें एक छोटी सी मेटालिक बॉल चाहिए, या एक पीस ऑफ स्टोन, वो भी चल जाएगा। एक स्टैंड चाहिए जिससे एक थ्रेड टंगी हो, और इस मेटालिक बॉल को हम क्या कहते हैं, द बॉब ऑफ द पेंडुलम। So the figure 9.4a shows the pendulum at rest in its mean position. तो जो इसमें पहली फिगर थी 9.4a, इसमें जो हमारा पेंडुलम है वो रेस्ट कर रहा है, एकदम स्थिर है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ 9.4b। तो अगर आप पेंडुलम को उठा के किसी भी तरफ ले जाओ, लेफ्ट या राइट, मतलब या तो ए पे ले जाओ या बी पे ले जाओ, और फिर उसको छोड़ दो, तो क्या होगा, ये पेंडुलम स्विंग होने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, और फिर वो पीरियोडिकली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करता रहेगा। सो when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. तो periodic motion क्या होता है, जो बार बार दोहराता रहे, and a pendulum's motion is also known as an oscillatory motion. तो वो pendulum क्या करता है, oscillate करता रहता है from left to right and then right to left, फिर left to right, फिर right to left. So this is also called a oscillatory motion. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O to A to B and back to O. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. तो यहाँ पे क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अगर आपका पेंडुलम में जो आपका बॉब है वो
एक पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन बैक टू द पोजीशन जहां से वो शुरू हुआ था, तो उसको एक ऑक्सीलेशन कहते हैं. What they're saying is that what is one oscillation? How do you calculate it? If you have a pendulum, let's say here, और फिर आप क्या करते हो, आप उसको हल्के से धक्का देते हो. Let's call this point O, और इसको हल्के से आपने धक्का दिया, तो वो क्या करेगा, वो यहां तक आएगा. Let's call this point A, और फिर वो वापस जाएगा. अब वो यहाँ पे रुकेगा तो है नहीं, तो वो कंटिन्यू करता जाएगा और फ्लो यहां तक होगा. Let's call this point B. फिर बी से जब वो रुक जाएगा यहाँ पे, तो फिर वो वापस इधर इधर की तरफ आएगा. तो ये जो पूरा एक मोशन है, ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से दोबारा ओ, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इसने शुरुआत की थी, इस पूरे ट्रिप को हम एक ऑक्सीलेशन मानते हैं. व्हेन it is back to the point where it started after covering all the points in its journey. तो इन इन अनदर वे वी कैन ऑल्सो से कि मान लो आपने अपना जो पेंडुलम है वो सीधे से नहीं छोड़ के पॉइंट बी से छोड़ा, तो क्या होगा कि ये पॉइंट बी से शुरू होगा, फिर ये नीचे आएगा, पॉइंट ओ पे पहुंचेगा, फिर ओ पे रुकेगा नहीं, फिर आगे चला जाएगा, फिर पॉइंट ए तक आएगा, फिर ए से होते हुए वापस ओ से होते हुए वापस बी तक जाएगा. So again, from where did you start this time? From B. So where you should end up again for one complete oscillation? You should again end up at B. तो यहाँ से ये शुरू होके A तक गया और फिर पूरा जर्नी करके वापस वहीं पे आया जहां से शुरू किया. And this is your one oscillation. तो अगर ये मान लो B B से A गया, फिर A से B आया, फिर B से A गया, फिर A से B आया, फिर B से A गया, फिर A से B आया, तो इसने इस बार कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए? 3, because I repeated this 3 times. So the number of times when it completes a full journey and returns to its starting point, this is called an oscillation. Clear? So this is what the author is trying to say here, that what is one oscillation? It is that when its bob starting from its mean position O, मतलब O से अगर शुरू होके वो मूव करता है और फिर वो कहाँ पहुंचता है, वो ए पहुंच जाता है. ओ से मूव करके पहले ए पहुंच जाता है, फिर वो वापस ओ पे आता है, इट कम्स बैक टू ओ, और फिर क्या करता है, सॉरी, ओ से ए पे जाता है, फिर ए से बी पे जाता है और फिर वो वापस ओ पे आता है. तो क्या करता है, ये पूरा एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लेता है. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो एक एक्सट्रीम से, मान लो इन्होंने ए से शुरू किया है, ए से शुरू करता है वो, फिर वो बी पे जाता है और फिर वो वापस ए पे आ जाता है, तो भी वो एक ऑक्सीलेशन पूरा करता है. सो इट शुड एक्चुअली complete its one full journey and come back to its starting point, and that means that it has completed one oscillation. Now the time taken by the pendulum to complete this one oscillation is called its time period. तो अपना पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, मान लो इस केस में ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया, इसमें इसको जितना भी टाइम लगा t, या फिर इस केस में यहां से चला था और फिर यहाँ पे वापस आया, तो जितना भी टाइम लगा t, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड. जितना भी टाइम लगा एक ऑक्सीलेशन पूरे करने में, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. सो यू अंडरस्टूड हाउ वी मेजर टाइम. इट इज द टाइम that the pendulum takes to complete one oscillation. So यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है. What this activity says is, set up a simple pendulum as shown in figure 9.a with a thread or a string of length nearly 1 meter. 1 मीटर की आप स्ट्रिंग लो और एक पेंडुलम बनाओ. स्विच ऑफ करो अपने फैंस. Let the bob of the pendulum come to rest at its mean position.
अब वेट करो कि बॉब एकदम रेस्ट पे आ जाए. मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर, बिलो इट और ऑन द वॉल. उसके बाद क्या करो, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच. तो आजकल जो डिजिटल वॉचेस होती हैं या आपके मोबाइल फोन में हर एक में स्टॉप वॉच होती है. इफ यू डोंट हैव अ स्टॉप वॉच यू कैन यूज अ रिस्ट वॉच और अ टेबल क्लॉक. दिस इज फॉर measuring the time. To set up the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. तो आप बॉब को पकड़ो और एक तरफ उसको ले जाओ. मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इज taut while you displace it. तो जब आप उसको साइड में ले जाओगे इधर लेफ्ट या राइट, so this will be your initial position of the pendulum. Take it to one side. When you take it to one side, make sure that the string is taut. Taut मतलब string एकदम straight होनी चाहिए, tight. ठीक है, एकदम सीधी होनी चाहिए. There should not be any slack in this string. कोई लचक नहीं होनी चाहिए. अब क्या करो, now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it's released. तो आप बॉब को एकदम छोड़ दो हवा में, उसको पुश नहीं करना है. Just leave it from its displaced position. Note the time on the clock when the bob is at its mean position. Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of its extreme positions. Measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillations and record your observations. तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो आपको नोट करना है कि बॉब अपनी मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा. फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको टाइम नोट करना है कि कब वो अपना दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा. तो मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा वो टाइम नोट कर लिया T1. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा जो उसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है, उतना टाइम नोट कर लिया T2. और फिर आपको नेक्स्ट क्या नोट करना है कि 20 ऑक्सीलेशंस में कितना टाइम लगा. तो 1, 2, 3, 4 ऐसे जब 20 बारी पूरा स्विंग हो जाएगा तो इस 20 ऑक्सीलेशंस के लिए आपको कितना टाइम लगा वो आपको नोट करना है T3. So this is the activity what you have to do. You have to record your observations in table 9.2. तो यहाँ पे आपकी आपके मदद के लिए एक टेबल भी दी गई है. बट दिस value that is entered here is just for example. So what you can do is you can record your own observations at place 2 and 3. Your observations could be different from this. The first observation shown is just a sample. Your observations could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observations. By dividing the time taken for 20 oscillations by 20, you get the time taken for one oscillation. तो क्या होता है कि आपने ये जो T3 रिकॉर्ड किया था ना 20 ऑक्सीलेशंस का टाइम, तो इस मान लो ये आया 20 सेकेंड्स फॉर 20 ऑक्सीलेशंस. तो आप इजीली वन ऑक्सीलेशन कैसे निकाल सकते हो, आप इस टाइम को 20 से डिवाइड कर सकते हो. इट्स सिंपल मैथ राइट. अगर 20 ऑक्सीलेशंस के लिए मान लो कुछ x टाइम आता है तो वन ऑक्सीलेशन के लिए कितना आएगा x अपॉन 20 राइट. और इन सिंपलर वर्ड्स अगर 20 ऑक्सीलेशंस के लिए अगर आपका 20 सेकेंड्स लेता है तो वन ऑक्सीलेशन के लिए कितना लेगा 20 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 1 सेकेंड. तो आपका जो भी टाइम आएगा आप उसको 20 से डिवाइड कर देना तो आपका एक ऑक्सीलेशन के लिए टाइम आ जाएगा. और एक ऑक्सीलेशन के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था टाइम पीरियड. दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. Right. So from here you can get the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? Note that slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum.
तो इसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी यहाँ से नहीं, मतलब आपने मान लो शुरू में यहाँ से छोड़ा अपने पेंडुलम को, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको थोड़े ऊपर से छोड़ते हो और फिर उसका ऑक्सीलेशन कैलकुलेट करते हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके कैलकुलेशन में. Nowadays, what happens is most clocks or watches, what they're doing is they're not actually using pendulum, but they're using electric circuits with one or more cells. तो आजकल क्या होता है कि पेंडुलम यूज करना थोड़ा कम हो गया है, और आजकल वॉचेस क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स यूज करते हैं. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clocks is much more accurate than that of the clocks available earlier. So, since these are based on electric uh, uh, principle, these clocks are far more accurate than the clocks that were earlier made. Right. Let's move on to the next topic, which is units of time and speed. तो एक तो हमने पहले पढ़ा था पर यूनिट टाइम. वहां पे जो यूनिट हुआ था दैट वाज फॉर वन. मैंने आपको पहले बताया था वन, राइट, सिंगुलर. बट यहाँ पे जो यूनिट की बात कर रहा है वो है जो हम आमतौर पे बात करते हैं मेजरमेंट के लिए. जैसे कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड्स में, डिस्टेंस को मीटर्स में, वेट को ग्राम्स या किलोग्राम्स में. आप समझ गए. सो यहाँ पे ये बात हो रही है, दीज आर दी यूनिट्स. तो यहाँ पे हम किसकी किसकी यूनिट की बात करेंगे, एक तो टाइम की यूनिट की बात करेंगे, एंड नेक्स्ट we'll talk about the unit of speed. The basic unit of time is a second. तो हम यूजुअली टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में. नॉट ऑलवेज बट यूजुअली. Larger units of time are minutes and hours. You already know how these units are related to one another. तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, या छोटी यूनिट क्या हो गई, सेकेंड्स. आपको अगर इससे बड़ी यूनिट्स चाहिए, देन you can measure in minutes or you can measure in hours, and you already know how these are related to each other. एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. इफ यू वांट टू गो इवन लार्जर यू कैन कैलकुलेट इन डेज. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24. सो दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ टाइम. व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. तो हमने पहले पढ़ा था कि स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको अगर किसी भी चीज की यूनिट्स निकालनी हो और अगर उसका फॉर्मूला पता हो, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला. जैसे यहाँ पे स्पीड की यूनिट हमें निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की यूनिट कितनी है, हम यूजुअली डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स पे, और हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड्स में. तो हम स्पीड की यूनिट बहुत इजीली कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स सिंपली मीटर पर सेकेंड और मीटर अपॉन सेकेंड. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, दिस सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, the basic unit of speed is meter per second. And this is very important. Units in physics or in science are one of the most important things that you'll come across. Of course, it could also be expressed in other units such as meters per minute or kilometers per hour. तो आप जैसे स्पीड यहाँ पे लिख रहे हो, लेट्स से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस आपका मीटर्स में भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है, किलोमीटर्स में भी हो सकता है. टाइम आपका सेकेंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है. सो योर स्पीड यूनिट में वेरी वेल बी मीटर्स पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आवर और meters per minute or anything, the combination of anything wherein your numerator is your distance and your denominator is your time. You must remember that the symbol of all units are written in singular.
For example, we write 50 kilometer and not 50 kilometers, और 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स, तो ये सिंगुलर में लिखी जाती है. हम 50 किलोमीटर बोलते हैं, हम 50 किलोमीटर्स नहीं बोलते. जब हम यूनिट्स लिखते हैं, बोलने में हम बोलते हैं आप 50 किलोमीटर्स, but when we write it we just write it as km and not kms, right? So let's move on. So Bhujo, let's say, is a person, and he's wonder what is he wondering, is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? So, what he wants to know is how many hours are there in a day. I think it's a very simple calculation, and we all can do it. In a day, there are how many hours? Sorry, there are how many seconds in a day? So we know that in a day there are 24 hours. In each hour there are 60 minutes, and in each minute there are 60 seconds. So if you multiply all three, 24 into 60, what you'll get the number of seconds in a day. Similarly, if you want to know how many hours in an year, you know there are 365 days in an year, and you know there are 24 hours each day. So if you multiply these both, you'll get the number of hours in a year. Okay, so this is a very simple task which you all can do, right? So let's move on. So this is an interesting note for you. There was a scientist called Galileo, and it's about him. uh, what's the story? So the story is about the discovery of the pendulum. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. So if you have a pendulum, and no matter from where you drop it, its time period is constant. You might have heard the name of the famous scientist Galileo Galilei. Um, it is said that once Galileo was sitting in a church, he noticed a lamp suspended from the ceiling with a chain moving slowly from one side to the other. He was surprised to find that the pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. Galileo experimented with various pendulums to verify his observation. He found that the pendulum of a given length takes the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of pendulum clocks. Winding clocks and wrist watches were refinement of pendulum clocks. So what did he notice? That when he was sitting in a church, he saw a pendulum, and the pendulum took the same time each time for each oscillation, and his the number of pulses that he had in that time was also the same. So what does he want to say? That the amount of time taken or the amount of pulses that he had in one oscillation were always same. Let's say his heartbeat or his pulse rate was 3 pulses for the first oscillation. It was again 3 pulses for the second oscillation, 3 pulses for the third oscillation, 3 pulses for the fourth. So uh, his pulse rate was exactly the same for each oscillation. So then he wanted to experiment that, is the time period always fixed? So for a given length of pendulum, the time period is always fixed. What do you want to do if you want to change the time period of a pendulum? You increase or decrease the length of the thread. If you increase the length of the thread, the time period will change. If you decrease the length of the thread, the time period will change. Right. So let's move forward. So different units of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in years rather than in days or hours.
तो आप अपनी जो एज बताते हैं वो अपने ईयर्स में बताते हैं, बट इफ यू वांट टू measure the distance, sorry, if you want to tell your friend, if you want to meet your friend, you'll tell him the time in maybe hours, like मैं 1 घंटे में मिलता हूँ, मैं 2 घंटे में मिलता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी एज बताएंगे तो वो you'll tell it in years. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप एक कन्वीनियंट यूनिट चूज कर लेते हैं टाइम बताने के लिए. सिमिलरली, it is not wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. तो आप अगर अपना टाइम बताएंगे कि मुझे घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो सालों में नहीं बताएंगे आप, वो यूजुअली आप यू माइट से इन मिनट्स और आवर्स. हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल of 1 second. The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second, verified by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal, healthy adult at rest beats about 72 times in a minute. That is about 12 times in a second. तो एक सेकेंड कितना होता है? It's the amount of time that it would take you to say 2001. तो जितनी देर में आप 2001 कहेंगे, एक सेकेंड निकल जाएगा. अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो आपका 1 मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड्स में 12 टाइम्स बीट करता है. राइट, यू जस्ट डिवाइड दिस बाय 6. So it's beating 72 times in 1 minute, which is 60 seconds. So in 10 seconds, how much will it beat? 72 divided by 6, which is 12 times. So 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for children. अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा ज्यादा तेज बीट करेगा. Okay, so let's move on now. Many times, measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular. So, how was the time measured before pendulum clocks were actually popular in other parts of the world? So, people were using sundials. So, they used to use the light of the sun, and as the light of the sun used to recede, they used to measure the time. मान लो सूरज की रोशनी यहाँ तक आई तो उनको पता लग जाता था 2 बजे हैं. अब सूरज ढलने लग गया तो रोशनी थोड़ी आगे तक आई तो 4 बज गए, फिर थोड़ी और आगे तक आई तो 6 बज गए, ऐसे होता था. दे कुड यूज वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स. तो आपने आप सभी ने एक ऐसा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसमें सैंड रखी रहती है, एंड द सैंड कीप्स पोरिंग फ्रॉम हियर. सो दीज आर सैंड क्लॉक्स. तो ऐसे कुछ डिवाइसेस हम पहले देखते थे. सो डिफरेंट डिजाइंस of these devices were developed in different parts of the world, and this is displayed in your figure 9.5. So let's just look at figure 9.5 for your convenience. So this is a sand clock, this is a water clock, wherein you have a hole here, and you know at what rate will the hole fill in this water. It's same as your sand clock. कितनी देर में sand यहाँ से नीचे गिरेगी, या कितनी ही देर में इस होल से कटोरी में पानी भरेगा. And then you have the sundial at Jantar Mantar, Delhi. So this tells you from the sun कि कितना टाइम हुआ है, from the sunlight and shadows. So all this was before we had the pendulum clocks, and now of course we have digital and analog clocks. So that's how we measure time. So let's move on to the next topic. How do we measure speed? Measuring speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. तो अगर आपको डिस्टेंस पता है और आपको टाइम पता है, जो कि हमने सीखा है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों चीजों से हम इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं.
right? So the book says that we are going to calculate the speed of a ball moving on the ground. So what are they telling us? They're telling us to draw a straight line on the ground with a chalk powder or lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. तो हम एक लाइन बनाएंगे चौक के साथ और हम अपने किसी भी दोस्त को बोलेंगे कि यार जस्ट स्टैंड 1 to 2 meters अवे फ्रॉम दिस लाइन, 2 मीटर दूर खड़ा हो गया. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल द बॉल along the ground in the direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. How much time does the ball take to come to rest? तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? What he'll do is he'll roll a ball from here perpendicular. आप समझते हैं perpendicular 90 degree. ठीक है? He'll roll the ball perpendicular to the line um, and in a straight line. And what you have to do is you have to record the time taken by this ball to cross the line and also the time taken by the ball to come to rest. तो ये बॉल अगर आगे निकल गई तो आप टाइम कैलकुलेट करना कि यार कितने टाइम में ये रेस्ट पे आई. तो लेट्स से दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t2. हो सकता है इसने बॉल रोल की हो, ये 2 meters कवर करने में 2 सेकंड लगाए हो और फिर रेस्ट पे आने के लिए इसने 5 seconds लगाए हो. ठीक है. So what's the next part of the activity? So this is the diagram where it's explained as to how we do it. आपका एक फ्रेंड है जो कि बॉल रोल करता है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कब वो लाइन क्रॉस करती है एंड देन व्हेन इट स्टॉप्स और व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. So we continue reading what's the next step. We measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. तो हमें ये तो पता है कि ये 2 meters है क्योंकि आपका दोस्त 2 meters दूर खड़ा हुआ था जो कि आपने बोला था. बट हमें ये नहीं पता कि यार ये कितना है. At what distance did it stop from the line? So what do we do is we measure this distance. Right. Let's say this distance is again 2 meters. आपने नापा, आपके पास स्केल था and then what you did was you measured this distance to be 2 meters. And this is all for example. So what do you have to do is now you have recorded everything. Now you have to calculate the speed of the ball. So what do you do in order to calculate the speed of the ball? You need distance and then you need time. So if I tell you that from your friend to this line, if you have to calculate the speed, how would you do it? You know that the distance covered by the ball was 2 meters, since we have this, and the time taken was 2 seconds, since we have this. So 2 upon 2 is 1 meter per second. Right. Now let's say if you have to calculate the speed of the ball from your friend to where the ball comes to rest, how would you do it? You know the total distance. This is 2 meters and this is 2 meters. So total कितना हो गया? 4 meters. And then you know the time taken is 5 seconds. So 4 upon 5 is 0.8. Now you must be thinking यार टाइम अलग अलग कैसे आ गया, स्पीड अलग अलग कैसे आ गई. यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आई और यहाँ पे 0.8 आई. सो व्हाट इज हैपनिंग इज जब आपने बॉल रोल की तो बॉल हल्के हल्के धीमे होने लग गई. राइट. और यहाँ पे आके रुक गई. सो हाउ डिड दिस हैपन? बिकॉज the ball kept slowing down over its whole journey, इसलिए स्पीड स्लो होती गई. तो शुरू में स्पीड सबसे तेज थी जब आपने बॉल रोल करना शुरू किया और बाद में स्पीड स्लो होकर एकदम जीरो हो गई थी और इसलिए बॉल रुक गई. तो अगर आप ओवरऑल स्पीड देखोगे तो कितनी है? 0.8 मीटर पर सेकेंड. So again, you can record your own observations and you can calculate
what the speed is. It may be interesting to know among another thing that you guys can do is, um, you may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. You need to know the distance of the school from your home or from some other point. Each of you can take can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. तो आप क्या कर सकते हो? Your friends and you can actually compare your speeds and see who is the fastest. आप कैसे कर सकते हो? मान लो आप सबको अपने घर से अपने स्कूल का डिस्टेंस पता है, किसी का होगा 5 किलोमीटर्स, किसी का होगा 3 किलोमीटर्स, किसी का होगा 7 किलोमीटर्स, ठीक है? तो हर एक को अपना डिस्टेंस पता है। फिर हर एक फ्रेंड, एवरी फ्रेंड व्हेन ही लीव्स द हाउस, जब भी वो घर से निकलेगा तब से अपना टाइम कैलकुलेट करना शुरू करे टिल द टाइम दैट ही रीचेस स्कूल। आप देखिए आपको कितना टाइम लगा स्कूल पहुंचने में। सेकंड फ्रेंड should also do the same, third friend should also do the same, and then what you do is you divide your distance upon the time that you took to reach to school. Same thing to be done by the second friend and same thing to be done by the third friend, and then what you do is you calculate your speed and then you see आप में से सबसे तेज कौन है। This does not mean that you should drive fast. आप आराम आराम से जाइए स्कूल. This is not a race, but this is just for you to understand the concept, right? So you have to fill your details in this. You have to you have to fill in the distance that the ball uh, moved by, and you have to calculate the speed. Sorry, you have to calculate the time taken, and then finally you can calculate the speed by distance upon time. So this is an activity that perhaps you can do on your own, right? So let's move on further. Rockets, satellites, launching satellites into Earth's orbit often attain speeds up to 8 किलोमीटर per second. तो जो रॉकेट होते हैं, जो हम जो सैटेलाइट्स को बाहर अर्थ के ऑर्बिट में ले जाते हैं, उनकी स्पीड अक्सर कितनी होती है? हाउ मच इज द स्पीड? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर तक चले जाते हैं। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 centimeter per second. Tortoise सिर्फ 8 सेंटीमीटर जाता है पर सेकेंड में। Can you calculate how fast is the rocket compared to the tortoise? So we see here that a rocket a rocket is going at 8 kilometers per second, whereas a tortoise is going at 8 centimeters per second. So how do we compare it? To compare it, first we need to make the units of both same. So we can say that a rocket, if it's going at 8 kilometers per second, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। So this is going at how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5. It's going it's going 8 lakh centimeters per second. So it's going 1 lakh times faster than the tortoise. If you compare it, 1 लाख गुना उससे ज्यादा तेज चल रहा है रॉकेट अपना, right? So that's how you actually compare speeds between two objects. You have to make the units same if you want to compare the speeds. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. तो आप उल्टा भी कर सकते हो. All of you have to do it. All you have to do is to multiply the speed by time. Thus, distance covered is equals to speed into time. तो मान लो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे? Speed is equals to distance upon time. Distance we know, time we know, and then we can find speed. But what if someone tells you that you know speed
and you know time, and then you have to find the distance. So what do you do is you multiply time both sides, right? और आप टाइम टाइम को कैंसिल कर सकते हो, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू speed into time. And you can also actually you can also see from the units. तो स्पीड की यूनिट्स कितनी है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट कितनी है, सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप फैक्टराइज करोगे या you'll reduce it to the lowest form, so what will happen is you'll have to cancel this. You can write this as s into 1. So what will this become, meter upon 1 or meter, and meter is the unit of distance. What was meter upon speed, meter upon seconds? This was speed. And what was seconds? This was time. So speed into time is distance. So this is how actually you can get the information of distance covered. What do? You just multiply speed into time. You can also find the time of an object would take to cover a distance while moving with a given speed. तो alternatively अगर आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो. हाउ कैन यू डू दैट? यू नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आपको स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, सो योर टाइम वुड बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आप टाइम को ऊपर ले जाओ और स्पीड को नीचे ले आओ. दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट. सो मूविंग ऑन. So here time taken is equals to distance upon speed. That's what we said here. Time taken is equals to distance upon speed. So you might have seen a meter fitted in the top of your scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles. तो एक मीटर लगा रहता है आपके कोई भी मोटर व्हीकल में, स्कूटी में, कार में, बसेस में, एंड देन देयर आर सम वैल्यूज हियर, और एक सुई रहती है फॉर मेजरमेंट, एंड इट गोज लाइक दिस, राइट. तो what is this for? The figure 9.7 actually uh, shows a dashboard of the car. तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ऐसी एक इमेज देखने को मिल रही है. एंड व्हाट इज दिस इमेज? This image is measuring what? It's, see over here, what you can see is kilometer per hour is written. So what is this? Speed. और ये फिर यहाँ पे एक किलोमीटर भी लिखा हुआ है. What is this? This is called the distance, right? Kilometer per hour is the speed and kilometer is the distance. So what is this measuring? What is this instrument measuring? Note that one of the meters has kilometers per hour written on at one corner. This is called the speedometer. Speedometer मतलब speed नापने वाला मीटर, ठीक है. It, what does it record? It records the speed directly in kilometers per hour. तो वो speed बताता है और कौन सी यूनिट में बताता है, किलोमीटर पर आवर में, right? There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. ये जो किलोमीटर में लिखा हुआ था ऊपर, वो क्या नापता है, वो डिस्टेंस नापता है यहाँ पे ऊपर. And what is this called? It's called the odometer. While going for a school picnic, Paheli decided to note the readings on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो पहली थी वो स्कूल पिकनिक पे जा रही थी और हर 30 मिनट बाद what she did was
she started recording the odometer's reading, and she did it after every 30 minutes. Later on, what she did was she recorded her readings in table 9.5. तो यहाँ पे आके उसने ये ये मीटर रीडिंग्स जो थी वो रिकॉर्ड कर दी, ये रही ओडोमीटर वाली रीडिंग्स, शी रिकॉर्डेड इट हियर. कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इनिशियल रीडिंग कितनी थी और फाइनल रीडिंग कितनी थी, एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, और यू कैन कैलकुलेट हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट. तो मान लीजिए इनिशियली आपकी ओडोमीटर रीडिंग थी 80000, और फिर फाइनली आपकी ओडोमीटर रीडिंग होगी 80035. ठीक है, तो आपका जो पिकनिक स्पॉट था वो कितना था, 80035 माइनस 80000, सो विच इज 35 किलोमीटर्स. ऐसे जब आप फाइनल रीडिंग को इनिशियल रीडिंग से माइनस करेंगे तो आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा. Can you calculate the speed of the bus? Of course, you can calculate the speed of the bus. You have the distance and then you have the time. You just have to divide the distance by the time and then you'll get the speed. Looking at the table, Buju asked Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 a.m. Now, this is a tricky question. Why? Because right now we were recording the readings after every half an hour. जहाँ पे आप देखोगे 8:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10. But if someone asks you what was the distance or how far had you reached when it was 9:45, then you need to actually calculate how did you reach or how far did you reach. They went to the teacher. She told them that one way to solve the problem is to plot a distance time graph. So let us find how such a graph can be plotted, and then how can we actually find where we were in the middle, and then how we can find that where or at what distance we could have been at any point of time between 8 a.m. to 10 a.m. And so let's stop here and we'll continue from here in the next session. Um, and if you have any questions, please feel free to leave comments. Um, and do not forget to like and subscribe. And I'll see you next time. Take care. Bye bye. Thank you.